Well, the records keep coming for this man, and he's managed to now take Pakistan to that #1 title. That celebration says it all for that 100. Another epic moment for him, another milestone, and another 100 in a match-winning cause. Congratulations to Pakistan. It was indeed a special knock by the man himself. Well, for the first time ever, which is a huge, huge achievement for Pakistan, they are now the #1 ranked team in the ICC men's ODI team rankings. What an achievement for them. It's happened for the first time in the history of Pakistan cricket. Hello and welcome to Inverex Solar Energy Pitch Side Show. Now, huge, huge congratulations to Pakistan for not just winning this game, but also managing to get right to the top of that table, the #1 side, the ODI side in the world right now. Now, I've been joined by a very, very special guest next to me. Salman Agha joins me alongside Arooj Mumtaz. पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका नाम आगा सलमान है या सलमान आगा? सलमान अली आगा। ये प्लीज ये कंफ्यूजन दूर करवा दें, सलमान अली आगा। ये बड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि वेबसाइट्स पे कहीं लिखा होता है आगा सलमान और कहीं वो, तो मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूं फॉर द व्यूअर्स, यू आर सलमान अली आगा। अच्छा जी, सलमान अली आगा साहब, ये बताएं, बड़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी, 50 आपने की, इम्पोर्टेंट टाइम पे आके की और जिस पेस पे की, थोड़ी सी आपकी जो एक हमें इंटेंट नजर आई है, हमेशा से ही ऐसे खेलते हैं या सिचुएशन के हिसाब को देख के चल रहे थे? कोशिश यही करता हूँ कि जो स्पिनर्स में ना थोड़ा अग्रेसिव ही रहूँ, क्योंकि मेरी गेम ऐसी है कि मैं स्पिनर्स को मुझे ऐसा लगता है कि मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो आज भी यही कोशिश की कि फास्ट बॉलर्स पर नॉर्मल रहा और स्पिनर्स पे कोशिश की कि जो मेरी शॉट्स हैं उनको खेलूँ। अच्छा, you know, you're talking about playing those shots and really sort of going after the spinners, but tell us a little about your history in terms of how you've come this far. A lot of people are not aware of your journey. What's been the struggle or what's been the one moment that you remember that has brought you to this point? ऐसे बिल्कुल जैसे हमारे मोस्टली क्रिकेटर आते हैं, मैं भी वैसे ही आया, टेबल से स्टार्ट की, उसके बाद फिर गली और मोहल्लों वगैरह में टेबल खेलने शुरू की, फिर क्लब ज्वाइन किया, अपोलो क्लब, जो कि आज ही मेरा क्लब है। उसके बाद प्रॉपर एक चैनल से अंडर 16 अंडर 19 वगैरह खेल के फिर फर्स्ट क्लास ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स खेला हूँ। उसके बाद टीम में आया हूँ, तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरे पास आया फर्स्ट क्लास का कि इधर आकर मतलब मुझे इतना वो मुश्किल हो नहीं रही। रूज, आपने जो इनकी आज इनिंग्स देखी, तो आपको क्या चीज़ इनकी इनिंग्स की आज बहुत स्टैंड आउट लगी? Zainab, I think you touched on it. It was intent. It was somebody who wasn't afraid to take the game on. जब ये आए अंदर उस वक्त इनकी इनिंग्स की वजह से वो टीम पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स का मोमेंटम चेंज हुआ। इनकी इंटेंट थी, खुद इन्होंने कहा कि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और ये चीज़ जो होती है ना कि जब आप दोनों तरफ खेल सकते हैं विकेट के, स्वीप, रिवर्स स्वीप एंड देन यूजिंग योर फीट, डांसिंग डाउन द ट्रैक, सो it is a huge space in the field that you can cover if you got those different range of shots. 2-3 चीज़ें उससे होती हैं कि obviously सामने वाला कप्तान जो है वो इससे इरिटेट होता है कि यहाँ स्वीप मारा, फिर यहाँ रिवर्स मारा, तो अब आप इन पॉकेट्स को ब्लॉक करने जाते हैं, then he wasn't afraid to use his feet. तो वो जो चीज़ें हैं, एंड इनकी इनिंग से मुझे लगता है कि जो टेम्पो बढ़ा, और जो बात हम करें कि पाकिस्तान टीम में जो मिडिल ऑर्डर है, बिटवीन दोज overs in the middle, we need someone to keep taking along at 6 runs and over, 7 runs and over, ताकि बैक एंड के लिए आपके पास वो प्लेटफॉर्म ले हो जाए, जो काम फिर इफ्तिखार, शाहीन और हारिस ने आके किया। सो आई रियली फील दैट टुडे द 335 has huge credit to him for the way he played his innings. और दूसरी बात जो उन्होंने की कि उनको इस लेवल पे आके मुश्किल नहीं लगता. It's because he has all that domestic experience and he's gone through the grind again and again. So for somebody to actually admit the fact that I really don't find that difficult says a lot about his own ability and the trust in it. Yeah, very good point. और इन्होंने आपकी स्वीप शॉट के बारे में बात की कि स्वीप मारते हैं, रिवर्स भी मार लेते हैं, कन्वेंशनल भी खेल लेते हैं। बहुत ज़रूरी है आजकल के क्रिकेट में स्पिनर्स के अगेंस्ट, स्पेशली टू सॉर्ट ऑफ अनसेटल देम। हर एक के पास वो शायद स्किल नहीं है टू एग्जीक्यूट देम प्रॉपर्ली। हर बैट्समैन जो है वो डिफरेंट होता है। तो इस पे क्या बहुत कोई नेट्स प्रैक्टिस हुई है, या लाहौर में जब आप थे तो बहुत स्पिनर्स को फेस करते थे, इसको कैसे डेवलप किया? मैं खुद भी स्पिन करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई स्वीप और रिवर्स भी मारता है ना, तो मुझे उससे बहुत जान जाती है, क्योंकि अगर कोई मुझे निकल कर छक्का भी मार देना तो मुझे उससे मसला नहीं रहता, क्योंकि मैं गेम में रहता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे स्वीप और रिवर्स भी मारता ना, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने फिर ये सोचा कि अगर मुझे गुस्सा आता है तो दूसरे अगर स्पिनर्स है तो उनका भी सेम ही होता होगा। और दूसरा, मैं जिस क्लब में खेलता था वो क्लब ऐसा है, उस पर उनकी जो विकेट है हमारी, वो वहाँ पे ऑलमोस्ट 40 ओवर का मैच होता था, 40 ओवर स्पिनर ही कर देते थे। तो वहाँ से ये चीज़ें सीखी हैं और वो फिर आज ओबियसली इंटरनेशनल में भी आके इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ।
अच्छा, एक बात उन्होंने की मिडिल ओवर्स के बारे में कि किस तरह पाकिस्तान को इंटेंट दिखानी होगी मिडिल ओवर्स में। ये इस चीज़ पे टीम में डिस्कशन हुई है कि 20 to 40 ओवर्स के बीच में थोड़ा सा पाकिस्तान को थोड़ा सा तेज खेलना होगा, बिकॉज आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, बड़ी बड़ी टीम्स मिलेंगी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बोलिंग अटैक्स होंगे, तो शायद वो मार्जिन ना मिले जो यहाँ मिल रही है। नहीं, बिल्कुल। हमारी जो टीम मीटिंग हुई थी उसमें ये था कि हम जो है ना वो 330 की टीम है। हम किसी भी ग्राउंड में किसी भी सिचुएशन में जाके 330 कर सकते हैं। तो जाहिर बात है उसके लिए आपको आपके जो मिडिल ऑर्डर है उसको एक या टॉप 3 को बैट्समैन को चाहिए कि 40 ओवर खेलें, और मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा आकर जो ओबियसली रना बॉल आके नहीं खेल सके, तब आप 330 पे जाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद बैक एंड आपके पास हमारे पास इनफ पावर हिटिंग है जो उसको यूटिलाइज कर सकती है। इनफ पावर हिटिंग भी है और जिसे कहते हैं कि क्लास भी है। और जब हम क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नजर आते हैं वो हमारे कप्तान है बाबर आजम। ही इज ऑल्सो अ हीरो ऑफ द डे। Hero of the match, brought to you by Inverix Solar Energy. Well, he's somebody who owns the moment and he's got pretty much all the shots in the book, plays on all sides of the wicket. Let's not forget his cover drive, the cut shot, he's able to sweep. You name it, this guy has got everything that a batsman should possess, and more importantly, the passion and determination that is required as a Pakistani captain. Hero of the match, brought to you by Inverix Solar Energy. अच्छा सलमान, बाबर एज कैप्टन, जिस तरह से वो रन स्कोर करते हैं, आई मीन दैट्स द वन थिंग दैट वी हैव सीन कि उनकी कप्तानी में उनकी अपनी बैटिंग जो है और मजीद बेहतर हो गई है, और रन्स आ गए हैं, एवरेज भी बेहतर हो गई है, अब स्ट्राइक रेट भी आहिस्ता आहिस्ता और भी। सो हाउ डज दैट इंस्पायर यू एज अ प्लेयर प्लेइंग अलोंगसाइड हिम? वैसे जब आपका कैप्टन फ्रंट से लीड कर रहा हो तो आपकी भी कोशिश होती है कि जो भी वो आपसे रिक्वायर्ड करता है आप वो उस पर पूरा 100% देने की कोशिश करें। और एज ए बैट्समैन तो मतलब उसकी क्या बात करेंगे कि लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं उसकी, मतलब आप उसकी क्लास को शो करने के लिए। तो ज़ाहिर बात उससे सीखते भी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस तरह वो मतलब फ्रंट से लीड करता है तो कोशिश करें कि हम भी उसी तरह, मतलब उस तरह तो ज़ाहिर बात है खेलना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो हमारी एबिलिटी है उसको मैक्सिमम कर सकें। बट टेक्निकली रूज, टेक्निकली लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकली। उन्होंने बात की कि किस तरह से वो इंस्पायर्ड हैं, क्या बात है उनकी टेक्निकली, क्या चीज़ है उनकी which sort of sets him apart from everybody else? I mean, if you sort of textbook or technique, I think he'll probably be closest to the ideal technique. Nothing is perfect in the world, but he's probably as close as it gets to perfect. And it's because of his technique, and you almost feel like it's a little bit of blessing as well, he's got that little bit of magic. सबसे जो उनकी बड़ी बात है वो बॉल को जितना लेट खेलते हैं, he gets that one split second more than probably anybody else to make better decisions and to play in areas and play shots where you'd almost like you're just in awe of the shot at that point. मैं जब बाबर की बैटिंग देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत टाइट बॉक्स अगर आप उनके गिर्द बना दें जिसमें वो खड़े में, तो he never goes out of that box. Then that is what it is. Compact technique, very, very confident of his technique, plays the ball very late, and the balance at the point of contact with his head driving pretty much everything. It is a class apart. It is actually class apart. जैसे अभी इन्होंने बोला है ना कि मतलब वो ही इज प्रोबेबली क्लोजेस्ट टू परफेक्ट टेक्निक। अगर आप उससे पूछेंगे ना तो वो ये बोलेगा कि जो मुझे लगता है कि उसकी जो सक्सेस का राज है, उससे पूछेंगे ना तो वो कहेगा कि आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू इम्प्रूव नाउ अभी इस वक्त। तो वो मतलब कभी उसको ये फील ही नहीं हुई कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन हूँ। तो आई थिंक दैट्स द पॉइंट जो है ना, उसको मतलब वो चाहता है कि मैं रोज़ कुछ नया सीखता जाऊँ। तो वो मतलब ये चीज़ मुझे ऐसी लगती है जो बार बार उसको मतलब इस तरह दुनिया का टॉप बैट्समैन बन गया और उसको लगता नहीं है कि वो है, विच इज़ अ वंडरफुल क्वालिटी। और प्रॉब्ली यही रीज़न है कि जिस तरह से कप्तानी आने के बाद उनकी बैटिंग में और निखार आते हैं, द नंबर्स कीप माउंटिंग एंड ब्रेकिंग फर्दर रिकॉर्ड्स। सो अगेन, और ये बात वो बिल्कुल सही है, ये बात वो हर इंटरव्यू में कहते हैं, हर चीज़ में कहते हैं कि ही इज़ वेरी ग्राउंडेड, वेरी डाउन टू अर्थ, एंड लर्निंग नेवर स्टॉप्स। और वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं, दैट्स प्रॉबली व्हाई ही इज़ राइट अप देयर। That's true. That's absolutely true. He's very grounded and like you said, he's always looking to improve. जो नंबर 1 बैट्समैन हो, सारी दुनिया कह रही हो, फिर भी उनके। अच्छा ये बताएं जाते जाते कि अभी तक जितना आपने अपने करियर में जितना आपने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक, कौन सा ऐसा बॉलर है जिसने तंग किया, या कोई मुश्किल बॉलर जिसको यू फाउंड अ लिटिल हार्ड इन टर्म्स ऑफ जस्ट रीडिंग हिम और फेसिंग हिम? वनडे क्रिकेट में तो अभी तक ऐसा कोई नहीं लगा, लेकिन टेस्ट मैचेस में मार्कवुड लास्ट ईयर पाकिस्तान में सीरीज हो रही थी तो मैं इसी ईयर, तो मुझे लगा था कि वो काफ़ी तेज़ और थोड़ा मुश्किल है जब बॉल रिवर्स हो रहा हो ना, और स्पेशली इन पिचेस पे, क्योंकि इन पिचेस पे बाउंस उतना ट्रू नहीं होता।
तो वो जब बाउंसर करता था ना तो लगता था कि यार लग ही ना जाए तो वो मुश्किल लगा. नहीं वाकई I think Butch also made this point in the show earlier on. Remember we were For talking Babar. about this कि for Babar, like I was just asking कि कोई ऐसा बॉलर है जो उनको भी तंग कर सकता है because he's such. He said थोड़ा सा discomfort नजर आया था, but that credit to Mark Wood for obviously bowling the way he did. But thank you so much, Salman, for joining us, and we wish you success. आगे World Cup भी आ रहा है, इंशाल्लाह we'll see you there. We'll see you perform for Pakistan. And इस नोट पे मेरा ख्याल से थोड़ा सा एक breather ले लेते हैं, जाते हैं ब्रेक पे और वापस आएंगे, and we'll be joined by Mr. David. Back on the Inverix Solar Energy Pitchside Show, and I've now been joined by Mr. David Grant Elliott. Or was it Grant David Elliott? It was Grant David Elliott. Grant David Elliott. I was actually gonna be really intrigued to see what you were gonna call me on the show today. Yeah, and I just switched it around a little bit. I like Didn't it. get it right. There was a couple of things said off air. We can repeat them if you want. Listen, you can repeat whatever you want. I'm an open book. All right. Tell the whole of Pakistan. We'll be kind to our I guests. think it's around midnight. It's we gotta around go midnight where we need to be toning it down now. We need to be toning it down. All right. I'll get to New Zealand, but I want to ask Please don't. Please don't. Don't get to New Zealand. Let's talk about Pakistan. Let's How talk well about did they Pakistan. play? Let's talk There about we go. Pakistan. I was just coming to that we'll talk about New Zealand, but you've seen Pakistan now win 4-0. What's been the standout aspect of their performance for you? 4-0. Thanks for rubbing that in, Zainab. I think, when I think of this Pakistan team, and you've got Imam who was left out today, or rested, rotation policy, whatever we call it. You got 3 world-class batters at the top, so in the top 5. And then you've got the bowling. I mean, you rotate your bowlers, but the way that they perform at the death and through the middle taking wickets, but also at the power play, you've got a very good team. I look at this team and I think this is a world-class team. Mickey Arthur said in his interview with you, he said, I walked into the change room and I looked at this team and I saw a lot of talented young players. And they're talented, but there's a lot of experience out in that field now, especially with the ball. Like I look at Harris Ralph, I look at Naseem Shah now, and I look at Shane Shah Afridi, 3, and Wasim Jr. who comes in under the tutelage of those bowlers. They're very experienced, and then the batters. So there's 6 players in a team that make up a world-class unit. Same question for both of you. If I were to ask you guys right now, sitting here, do you think Pakistan has the potential to win the World Cup, or at least, let me say, make it to the semi-finals, the 4 semi-finals? Do you think they have the potential to be there? Yes, 100%. They just need, they need 2 things. They need to know who their finishers are in the middle and who their spinners are going to be. If they've got that, I'm actually confident that they're easily top 4 in the world. Well, see, Pakistan has always had teams that you'd imagine can win World Cups. It's something that they don't connect. In that jigsaw puzzle, like he's saying, we've got brilliant top 3 with the bat. We've got excellent bowling lineup. We've got the jigsaw puzzles, but we just don't connect them properly. And that's been a story for a very long time for all of us. Today, what was good to see that players 5, 6, 7, and 8 for Pakistan, that middle order that we keep talking about, we keep harping about it. Players 5, 6, 7, and 8 scored 126 runs in 83 deliveries, striking at 150 plus. And that's the jigsaw puzzle piece that they need to connect properly, arrange in the way that works for them, that will win you tournaments. Because again, they've got the bowling to do so. They need par scores to be above par, and then their bowling can always do the job. It's when we don't get the par scores and you ask too much of the bowlers time and again, and you will falter at points, and that's what happens in the past. 22 T20 World Cup, 21 semi-final, Asia Cup final, we lose it at the crunch time because we don't get enough runs. Even the 4th T20 international that we saw that New Zealand managed to win, where it seemed like Pakistan were perhaps dominating that series until New Zealand performed really well. Full credit to them, but you've got to look at areas of weakness. But having said that, kudos to them for achieving what they have achieved today, which is the #1 side, and they've also been winning a lot in this format. Let's have a look at the stat attack for today. Stat Attack, brought to you by Inverix Solar Energy.
highest winning percentage. If you look at it from the start of that, from the end of that World Cup 2019 in England in one-day internationals, Pakistan is right on top. They have a percentage of win percentage of 70, which is higher than anybody else. I mean, you look at the amount of matches that they've played, 27 matches, out of which they've won 19. That's pretty good. Like, overall record when you look at it, you know, I'll ask you, Ruj, because you've been following it since the time Pakistan played Australia last year. There have been ups and downs with regards to the test format. You know, we've lost a few, not been at the very best. T20s has been on and off. It's a bit inconsistent, but this is the one format that Pakistan has totally dominated. And exactly, the numbers speak for themselves. It's just that in global events, with those numbers, you expect Pakistan to win. And every time they come close or something doesn't go according to their way, so the expectations are really high. And they were very good at bilateral cricket. You saw numbers, Fakhr, Babar, Shaheen Shah Afridi, everybody. And the win percentage miles above and far ahead of everyone else. But again, the pinnacle of the one-day format is the World Cup. You're called one-day champions when you win that World Cup, right? And that is the missing link. All right. It is really about lifting the trophy. That's what Arooj Mumtaz is saying, you know, making or capitalizing on the crunch moments. That was the stat attack for you. Stat Attack, brought to you by Inverix Solar Energy. All right, the fans had a great time here, as always. You know, we've seen that throughout the series. Just generally, the fans that have come out, they've really enjoyed it, especially a Babar Azam 100. Who would not enjoy that? It's time for the fans' verdict. Well, Pakistan bags another victory in this fourth ODI, continuing their winning streak. The Kiwis, unfortunately, still winless. However, nonetheless, we still witnessed some brilliant cricket here today. So let's go speak to the fans and ask them their experience at the ground. अच्छा, पाकिस्तान की आज आपने जीत लाइव देखी स्टेडियम में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत खुशी हुई है। आज बाबर आजम ने फिर सेंचुरी की है और वो हमारा सुपरस्टार है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो नंबर 1 भी है रैंकिंग में और वो हमारी टीम को भी इसी तरह जीत दिला के नंबर 1 रैंकिंग में ले आएगा और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि न्यूजीलैंड से जीतना कोई आसान बात नहीं है। आज अपनी फैमिली के साथ आए, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आए मैच देखने के लिए, तो पाकिस्तान की जीत के बाद आपको आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, स्पेशली फर्स्ट टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और कराची में नेशनल स्टेडियम में बहुत वाज अ ग्रेट एटमॉस्फेयर और लव द क्राउड और बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छी गेम। तो आप बताएं कि आज पाकिस्तान की जीत के बाद आप कितने खुश हैं कि आपने ये लाइव देखी जीत? अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं 2 बार, एक बार PSL और एक बार पाकिस्तान का गेम देखने आया था जिसमें पाकिस्तान नहीं जीता था, तो ये मैंने पहली बार पाकिस्तान को ग्राउंड में देखा है। ग्राउंड में, ऐसे तो टीवी में तो अक्सर जीतता रहता है पर ग्राउंड में पहली बार देखा है। पहली दफ़ा जीतते हुए भी देखा है? हाँ, ग्राउंड में पहली दफ़ा। वेरी नाइस। और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा बहुत अच्छा था। मेरा फर्स्ट टाइम तो मैं सऊदी अरेबिया से इधर ही मैच देखने आया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान ऐसे ही मुकाबले करते रहे और जीते। बाबर आजम की सेंचुरी, उसामा मीर की बॉलिंग और सलमान आगा की भी जो हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई है, और ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रह चुकी है इस ODI सीरीज़ में, उसको आप कैसे रेट करेंगे? सबसे पहले तो ये कि कराची वालों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त समा बांधा। ख़ासतौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हुकूमत का, जिन्होंने इतनी अच्छी सिक्योरिटी फराहम करी, एक फैमिली इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया। और सबसे बड़ी बात कि इस गर्मी में भी लोग देखने आए, इंजॉय किया मैच को। बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्लेयर हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगा उनकी इस तरीके से इनिंग फॉर्म में आते हुए देखना। हारिस रऊफ की बॉलिंग, मोहम्मद वसीम और ख़ासतौर से उसामा मीर को आज चांस मिला तो उन्होंने जो है उस चांस को ज़ाया उन्हें नहीं दिया, बल्कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, शायद आपकी कमी उन्हें नहीं दी। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, मैं ये कहूँगा कि न्यूजीलैंड की वो टीम नहीं थी जो कि एग्जैक्टली है, लेकिन उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी तरफ से फाइटिंग रही। तो एक अच्छा कंपटीशन देखने में आया और मैं चाहता हूँ कि यही कंपटीशन और इस तरीके का और मैचेस आएँ और टीम्स भी आएँ। अब आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसके लिए हमारी जो टीम है माशाल्लाह से बहुत अच्छी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड विश देम बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू। Thank you so much for speaking to them, Mehak. Thank you so much, Dr. Arooj Mumtaz Khan, Grant David Elliott. All smiles because we are packing up and going home, but we're not going home for long.
because we will be coming back for the 5th one-day international, which will be on the 7th of May, very much here in Karachi. The timings are pretty much the same. We start at 2:45. It's the DAFA News presents KFC Pakistan versus New Zealand ODI series, and we'll be live here from the National Bank Stadium, Karachi. Great game today, and more importantly, it's huge news for all the Pakistan fans that Pakistan side has now made it to that #1 rankings in that overall table that you've seen, and they'll be looking to sustain it by winning the 5-0 series against New Zealand and obviously having that great whitewash. Until next time, from all of us here, it's goodbye, good night. Oh, hit the stumps. Mohammad Rizwan, big wicket. One-day international hundreds for Babar Azam. Straight up in the air. Fielder tracks back. Oh, that's brilliant. That is a magnificent strike. Wow, Mark Chapman.